Article 20 clause 2. 20 clause 2. So we have already seen ये जो previous year questions है उसमें we have seen the double jeopardy. Now please read the question once again. Protection against double jeopardy is granted under which provision of Indian Constitution? So Article 20 clause 2. Article 20 clause 2. 2. Now ये जो क्वेश्चन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी. व्हाट इज अ डबल जियोपार्डी? डबल पनिशमेंट ना, कोई भी एक ऑफेंस करे तो एक ऑफेंस पे डबल बार पनिशमेंट नहीं देते. डबल जियोपार्डी मींस one offense and multiple time punishments. डबल जेओपार्डी का मतलब क्या है? Let's see the chat box. What is a double jeopardy? What is a double jeopardy? One Hello. offense and multiple time punishment. Punishment. No double jeopardy मतलब no man should be punished. No man should be punished twice for the same offense. डबल jeopardy का मतलब है punishment for the same offense multiple times. No double jeopardy मतलब no man should be punished twice for the same offense. ठीक है, राइट? समझ में आ रहा? यस और नो? सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, where is the protection of the against double jeopardy is given? 20 clause 2. Article 20 clause 2. Article 20 clause 2. So in our constitution it has been given as no man shall be punished twice for the same offense, which is called as protection against double jeopardy. Now what is our option, correct option? Four. Option number 4, Article 20 clause 2. ठीक है, this is our option, but there are other options also. What is article number 19 clause 1? Right to freedom for speech. Now when you see article 19, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर. Now what is article number 19? Protection of certain rights regarding freedom of speech and etc. Protection of certain rights regarding freedom of speech, Freedom of speech. etc. ठीक है, that is article number 19. Second option क्या है? 21. 19 clause 1. 19 clause 1 उसी क्या है? Freedom of speech आता है 19 clause 1. What is article 21? Protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. ठीक है, so article number 19 is, what is article number 19? Right to freedom for speech. Right to freedom of speech and etc. What is article 21?
Protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. Now, when you see the article number 20, what is Article 20? Protection in respect of conviction for offense. So, protection in respect of conviction or offenses. 20 clause 2 is No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than one time. so More it is than called once. as this clause 2. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once is called as protection against double jeopardy. समझ में आ रहा? So, Raghu, if it is one line, you have been asked एक लाइन में आपको what is protection against double jeopardy समझाओ बोले. So what is the one line? No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. More than once. What is it called as? Double jeopardy. Double jeopardy. ठीक है? Clear a point? Yes or no? Yes. Okay. So पहला क्वेश्चन क्या है? Protection against double jeopardy. Guaranteed under which provision of the Indian Constitution? What is Article 19? Article number 19 क्या है? Freedom of speech, Freedom of speech protection of and certain rights regarding freedom of speech, etc. what is Article 21? Protection of life and personal liberty. What is Article 20? Article 20, sir. Protection in respect to conviction for offenses. Protection in respect of conviction of offenses. Specifically, 20 clause 2 is No protection against double jeopardy. protection against double jeopardy. Next. Next question. What is the next question? By law making power granted to executive by the legislature is called delegated legislation, tolerable legislation, administrative legislation, supreme legislation. And supreme legislation. So, by law. By law का मतलब क्या है? जो आप एक अपना बनाते क्या बोलेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन. बाय लॉस का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया उन्हें? What is the first Delegated, delegated legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? डेलीगेट करना. डेलीगेट का मतलब डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेट करना माने काम आगे बढ़ाना. अपने पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने ऑर्गन्स है कॉन्स्टिट्यूशन के? 3 organs. 3 ऑर्गन्स. क्या कौन से? Legislature, Legislature, judiciary, executive. लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. Executive. लेजिस्लेचर का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर? To make laws. To make laws. टू मेक Create laws. टू मेक लॉस. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? Implement the laws. इम्प्लीमेंट करना. तो काम एग्जीक्यूटिव काम कौन दे रहा है उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए? Legislature. Legislative. लेजिस्लेचर. तो ये जो प्रोसेस है, जो काम द प्रोसेस थ्रू विच
legislature is giving work to executive for its implementation is called delegated legislation. Understood? So delegated legislation किसको बोलेंगे आप? The process in which legislature is giving work to the executive is called as delegated legislature. Legislation. Legislation. अगर अब इसको आप फॉर्मली बोले, law making power given by the legislature to executive is called as delegated legislation. क्या बोलेंगे इसको आप? Delegated legislation. अब अपने पास जो लेजिस्लेचर है दो लेवल पे है, यूनियन पार्लियामेंट, State. एट सेंट्रल लेवल, Yeah. Union at And- central level. स्टेट असेंबली एट स्टेट लेवल. एग्जीक्यूटिव दोनों के सेम रहते, बट अगर आप यूनियन लेवल पे देखें तो क्या है, हु इज द लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट. स्टेट Upper. लेवल पे देखें, हु इज द लेजिस्लेचर? Assembly. असेंबली है. तो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जो एग्जीक्यूटिव को काम करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो वक्त देता, जो काम दे, उसको क्या बोलेंगे आप? Delegated legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. डाउट्स? कुछ डाउट्स है इसमें? If you have any doubt, you can ask now. आयशा सफत, आयशा सिद्दीका, कामिल, मरवा, इनामुल हसन, हार्दिक. If you have any doubt, you can ask now. No, sir, no doubts. Okay. So क्या है अपना आंसर? By law making power माने rule making power granted to the executive by the legislature is called as Delegated Delegate- legislation. legislation. delegated legislation. ठीक है. Next, you have colorable legislation. What is the second option? Colorable legislation. Colorable legislation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, what cannot be done directly cannot be done indirectly. Colorization क्या बोल रहा हूँ मैं? What cannot be done directly cannot be done indirectly. माने आप कोई चीज, गलत चीज करना चाह रहे, जो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा, आप वो डायरेक्टली नहीं कर सके, इनडायरेक्टली करना चाह रहे, तो, Hmm. तो आप क्या है, By the कलरेबल help of लेजिस्लेशन someone. बोलते. नो, विद द हेल्प और विदाउट हेल्प. जो काम, जो गलत काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, वही काम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. तो क्या बोलेंगे आप? Okay. Colorable legislation. कलरेबल माने कलर्ड. इससे ये जो आया वर्ड, अब जब फॉर एग्जाम्पल इरफान हो गया, समझो जॉन्डिस हो गया, तो हाउ बॉडी कैसा दिखती? अगर जॉन्डिस हो गया, किसी कोई एक्सपीरियंस करे या किसी को हुआ सो देखे जॉन्डिस, Yes, sir. Yellow color आता या white color. येलो कलर माने आंखें क्या है, पीले पीले हो जाते.
जी। तो क्या है, गलत, कुछ गलत हो रहा है ऐसा बोल के दिखता, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू बोलते, माने कुछ, कुछ गलत, कुछ रॉन्ग। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको आप? कलरेबल टॉलरेबल लेजिस्लेशन का लेजिस्लेशन। मतलब क्या है इसका? जो भी अगर कोई कानून लाना चाह रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, कुछ गलत काम, तो जो आप डायरेक्टली नहीं ला सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं ला सकते। तो क्या मतलब, क्या है उसका? टॉलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, अभी तो इतना याद रखो काफी है। So what is delegated legislation? Law making power given by the legislature to executive is called as delegated legislation. So, and what is colorable legislation? What cannot be done directly cannot be done indirectly. ठीक है, सो क्लियर है पॉइंट, समझ में आ Yes, रहा? sir. थर्ड क्या है? Administrative legislation. एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर चीज जो एग्जाम में आते हैं आपको, वन इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, द अदर वन इज कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, ओके। अब ये भी देखो, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। अगर आप समझना चाह रहे तो लॉ मेकिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन अगर बोले आप, लॉ मेकिंग पावर डेलीगेटेड और granted to the administration by the legislature is called administrative legislation। तो क्या बोलेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। सो व्हाट सुप्रीम लेजिस्लेशन माने? व्हाट इज वॉट सुप्रीम एवर सुप्रीम लेजिस्लेशन? कोर्ट। गलत। सुप्रीम लेजिस्लेशन Court माने को लॉ मेड बाय द Supreme लेजिस्लेचर। Court. सुप्रीम लेजिस्लेशन नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। लॉ, सुप्रीम कोर्ट को लॉ बनाने का इख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम ओके। क्या है? लॉ बना या नहीं बना इम्प्लीमेंट उसको करना। चेक करना है, बस उतना ही। ओके। सुप्रीम कोर्ट को लॉ बनाने का नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन राइट्स, यस यस। हैज नॉट गिवन राइट्स टू फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू मेक लॉ। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम लेजिस्लेशन मतलब क्या है? लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और द पेरेंट बॉडी। तो सुप्रीम लेजिस्लेचर मतलब बॉडी में सुप्रीम लेजिस्लेशन। लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और द पेरेंट बॉडी। मतलब पार्लियामेंट सर, पेरेंट बॉडी बोले तो माने पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब ये है जो काम दूसरों को दिए। टॉलरेबल लेजिस्लेशन मतलब कुछ गलत काम या अनलॉफुल वर्क which cannot be done directly, cannot be done indirectly also। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन
जो काम पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन, व्हाट इज सुप्रीम लेजिस्लेशन? Law made by legislature or लॉ the मेड बाय parent द body. लेजिस्लेचर और द पेरेंट बॉडी। समझ में आ गया? So these are the four types of legislation. Next, please read the next question. Who is responsible for the introduction of public interest litigation in India? So how many Justice times we have P. seen this? Bhagwati. Multiple times. So In आपको यही almost क्वेश्चन कैसा आता? father of the PIL. Father of public interest litigation in India. Who is the father of public India. litigation in India? Justice P.N. Bhagwati. Justice PM भागवती। वही सेम क्वेश्चन कैसा आया? Who is responsible for the introduction of PIL in India? ठीक है, see the what we have seen multiple times. So PIL कहाँ से लिए? कौन से कंट्री से PIL स्टार्ट हुआ? USA. पहले यूएसए। USA. PIL USA. स्टार्ट यूएसए। यूएसए में PIL को क्या बोलते हैं आप? Socialist interest Social litigation. सोशल action litigation. एक्शन लिटिगेशन। Social ठीक है, action litigation. ओके। कौन PIL फाइल कर सकता? Any public Spirit spirited person. person. पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। ठीक है, इतना इतना तो याद है आप लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन? Justice M.N. Venkatachalaya. वेंकट चलैया। why he is known, why he is famous? Because he was the chairman of He was the National chairman Human of Rights Commission, as well as he has reviewed the Constitution of India. National Commission to National review Commission. the working of the Constitution. So was also chairman of human rights. But more importantly, why he is morally news? He was the he was what? He was chairman of what? Most important commission. Review of the Constitution of India. He was the chairman of National Commission to review the working of the Constitution. Constitution. NCRWC. क्या बोलेंगे इसको आप? NCRWC. Okay. So you might get a question. What is NCRWC? National Commission or National Commission to review the working of the Constitution. So who is the first chairman? Who was the chairman for the National Commission to review the working of the Constitution? M.N. Venkatachalaya. M.N. Venkatachalaya. Third, Third one, Justice A.M. Ahmadi. Justice A.M. Ahmadi. What is his contribution? He is the 26th Chief Justice of India. Justice A.M. Ahmadi, 26th Chief Justice of India. अभी तक how many Muslim Chief Justices have been appointed?
Fatima Bibi, Fatima Bibi is the first woman woman Muslim chief Chief justice. Justice. Okay. So you can just remember it as he is the 26th Chief Justice of India. What is the fourth option? Justice Gajendra Gadkar. Justice Gajendra Ghatkar. He was the 7th Chief Justice of India. Justice Gajendra Gadkar. He is the 7th Chief Justice of India. So, what is the contribution to Bhagwati? Bhagwati is for introduction of PIL in India, public interest litigation. What is Venkatacharya का contribution क्या है? What is the contribution of Venkatacharya? He was the He chairman was the chairman of National Commission to review the working of the Constitution. A.M. Ahmadi. 26th Chief Justice of India. Chief Justice of India. Justice Gajendrakar. 7th Chief Justice of India. ठीक है. So ये आपका contributions आपको याद रहना. ठीक है. Next question. Who propounded the doctrine rule of law? Rule of law, A.V. Dicey. So there are some doctrines, famous doctrines, means rule. So what are the options given? Lord options given? Blackstone, Lord Blackstone, Lord Denning, उसके बाद A.V. Dicey, A.V. Dicey, Henry Maine. हेनरी मायने. ये पूरे के पूरे कौन है? दे आर ऑल जूरिस्ट. जो चार के चार नामा है, ब्लैकस्टोन, डेनिंग, A.V. Dicey and Henry Maine. They are all jurists बोलते हैं. jurist मतलब सर Judges type. okay And they are the eminent judges, eminent judge, jurist, legal scholars. माने लॉ की पढ़ाई में महारत हासिल करे सो लोग, who have excelled in the study of law, they are called as jurist. Some become judge, Okay. some become jurist, but they are people who know the law, what they are reading. Okay. So what is the first option? Lord Blackstone. Lord Blackstone. Why he is famous? He wrote commentaries. He wrote commentaries on the laws of England. What is the book written by Blackstone? He have written Laws of England. Commentaries on the laws of England. ठीक है. लॉर्ड डेनिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है? ही इज ऑल्सो जूरिस्ट. तो ना इतना याद रखो, ना बुकान लिखे. दे रोट बुक्स.
they wrote books. ठीक है, इसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या है? A.V. Dicey. एवी डाइसी, मोस्ट कॉमन रूल ऑफ लॉ कौन दिए? रूल ऑफ लॉ गिवन बाय A.V. Dicey. एवी डाइसी। इतना याद रखो, ठीक है। और व्हाट इज हेनरी माइने? ही इज आल्सो ए जूरिस्ट। So who is Henry Lord Minor? Denning also jurist. सब जूरिस्ट है, Okay. ठीक है। सो अपना ये सेशन अब एंड होता, प्लीज री लॉग इन अगेन, ठीक है। Okay, sir.